संसदः उभयोः सदनयोः महत्वपूर्ण विधायि कार्याणि सूचीबद्धानि। लोकसभायाम् एतद्वर्षीयम् ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयकं चर्चायै उपस्थास्यते। सममेव 93अधिकैकशतं नियमान्तर्गतं देशे क्रीडाः वर्धनाय समुत्थापित पदक्षेपेषु अपि चर्चा। अपरतः राज्यसभायां 20-22 वर्षीयं फैमिली कोर्ट्स इति संशोधन विधेयकं चर्चायै उपस्थास्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य धर्मपुरे श्रीमद् राजचंद्र मिशन इत्येतस्य अभियानस्य विभिन्न परियोजनाः दृश्य श्रव्यान्तर्जालीय माध्यमेन लोकार्पयिष्यति, शिलान्यासं च विधास्यति। प्रधानमंत्री मोदी वलसाड जनपदस्य धर्मपुरे श्रीमद् राजचंद्र चिकित्सालयस्य अपि उद्घाटनं करिष्यति। शीर्ष न्यायालयम् अद्य महाराष्ट्रियं राजनीतिकसंकटं, शिवसेना दलीयानां विद्रोही विधायकानां सदस्याम् अयोग्यपरं प्रकरणम् आलक्ष्य वादश्रवणं विधास्यति। शिवसेना दलीय चिह्न विषये अपि न्यायालये वादश्रवणम्। कंबोडियायां भारत आसियान उपवेशनम् अद्य विदेशमन्त्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकरः भागं ग्रहीष्यति। प्रथमे दिवसे डॉ जयशंकरः यूरोपीय संघस्य वैदेशिक प्रकरणानाम् उच्च प्रतिनिधिना जोसेफ बोर्वेल इत्यनेन साकं मेलनम् अकरोत्। सममेव 12 शताब्दी के अंकोर वाट मंदिरे अपि यात्रा कृता। राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतीयं दलं भव्यं प्रदर्शनं यथावस्थं विदधति। तेजस्विनी शंकरः राष्ट्रमंडल क्रीडासु उन्नत कूर्दन प्रतियोगितायां प्रथमवारं भारताय पदकं विजितवान्। अपि च सौरभ घोषाल स्क्वॉश एकल प्रतियोगितायां राष्ट्रमंडल प्रतियोगितायां भारताय पदकं विजित्य इतिहासं व्यरचयत्। अभिवादये, अहमस्मि ऋचा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। संसदः उभयोः सदनयोः प्रमुख विधायि कार्याणि सूचीबद्धानि सन्ति। लोकसभायाम् अद्य ऊर्क संरक्षण विधेयकं 20-22 विचारयिष्यते। एतदुद्देश्यं नवीकरणीयोग वर्धनं, भारतस्य च कार्बन पदार्थोत्सर्जनेन अल्पताकरणम् अस्ति। सहैव 93-100 नियमान्तर्गतं देशे क्रीडादि संवर्धन संदर्भे पदक्षेपान् विधातुमपि चर्चयिष्यते। तत्रैव राज्यसभायां पारिवारिक न्यासिकसंशोधन विधेयकं 20-22 विचाराय पटले भविष्यति। लोकसभायां चैतद् विधेयकं प्रागेव पारितम् अभवत्। बुधवासरे राज्यसभायाः कार्यजातं सामान्य रूपेण प्रवर्तितं शून्यकाल प्रश्नकालावधौ महत्वपूर्ण विषयाः समुत्थापिताः। मध्याह्नानन्तरम् एतद्वर्षीयं सदने राष्ट्रिय डोपिंग रोधी विधेयकं चर्चायै समुत्थापितम्। चर्चां प्रत्युत्तरन् युवखेल मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः प्रत्यपादयत् यत् डोपिंग इत्येतदर्थं भारतं संवेदनशीलः अस्ति। अपि च इदं विधेयकम् अभ्युपगते सति परीक्षणमूल्येन न्यूनं भविष्यति। सः प्रत्यपादयत् यत् प्रशासनं विगतेषु 8 वर्षेषु क्रीडकेभ्यः नैकेषु क्षेत्रेषु सौविध्यम् उपकल्पितमस्ति। सदनेन साकमेव संसदा अपि इदं विधेयकं संसदि अभ्युपगतम्। एक साल पहले जहां हम सस्पेंडेड हमारी टेस्टिंग लेबोरेटरी थी, इस बार जब हमने होस्ट किया तो इंडिया को फंड अप्रूवल कमेटी का चेयरपर्सन भी चुना गया और मेंबर भी चुना गया ब्यूरो का। ये एक साल में हमने सब कुछ किया है। और जब आप ये कानून आज बनाने जा रहे हैं तो इसके बाद भी दुनिया भर के देशों में और वाडा में एक संदेश स्पष्ट जाएगा कि भारत खेल, खिलाड़ियों और डोपिंग को लेकर बहुत गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य सायंकाले दृश्य श्रव्य इति परान्तर्जालीय माध्यमेन गुजरातस्य वलसाड जनपदे श्रीमद् राजचंद्र मिशन धर्मपुर इत्यस्य विभिन्न परियोजनानां लोकार्पणं, शिलान्यासं च करिष्यति। प्रधानमंत्री वलसाडस्य धर्मपुरे श्रीमद् राजचंद्र चिकित्सालयस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य निर्माणं प्रायः 200 कोटि रूप्यात्मकाणां व्ययेन भविष्यति। अयम् अत्याधुनिक चिकित्सालयः अस्ति, यः विशेषतया दक्षिणी गुजरात क्षेत्रस्य जनेभ्यः विश्वस्तरीय चिकित्सा सौविध्यं प्रदास्यति। प्रधानमंत्री श्रीमद् राजचंद्र पशु चिकित्सालयस्य आधारशिलामपि स्थापयिष्यति, यस्य निर्माणं प्रायः 70 कोटि रूप्यात्मकानां व्ययेन भविष्यति। प्रधानमंत्री अस्मिन् अवसरे श्रीमद् राजचंद्र सेंटर ऑफ
एक्सेलेंस फॉर वुमेन इत्यस्य आधारशिलामपि स्थापयिष्यति। अस्य निर्माणं प्रायः 40 कोटि रूप्यात्मकानां व्ययेन भविष्यति। अयम् अधुना 700 आदिवासी महिलाभ्यः अनन्तरम् अन्येभ्यः सहस्राधिकजनेभ्यः अपि आजीविकां प्रदास्यति। महाराष्ट्र राज्यीयं राजनीतिक संकटम् आलक्ष्य सर्वोच्च न्यायालये अद्य वादश्रवणं यथावस्थमेव प्रवर्तयिष्यति। प्रकरणे अस्मिन् उद्धव ठाकरे नेतृत्वयुतः समूहः अपि च एकनाथ शिंदे इत्येतस्य समूहः च स्वीयं तर्कवितर्कम् उपस्थास्यतः। शिवसेना दले विसङ्गतिः, नूतन प्रशासन रचना, दलस्य चिह्नम् आलक्ष्य च सर्वोच्च न्यायालये वादश्रवणावधौ बुधवासरे ते विधिविषयाः निश्चेतव्याः सन्ति। येषु विषयेषु संविधानपाठं वादश्रवणं करिष्यति, किन्तु समूहद्वयं प्रकरणानि आलक्ष्य स्पष्टौ नैव स्तः। अतः विध्यनुगुणं विषयाः न खलु सूचिबद्धाः। अपरतः बुधवासरे सर्वोच्च न्यायालये उद्धव ठाकरे समूहस्य पक्षतः उपस्थापितः वकीलः कपिल सिब्बलः उक्तवान् यत् एकनाथ शिंदे इत्यनेन भारतीय जनता पार्टी इति दले समावेशनीयः अथवा नूतनदलं विरचयित्वा निर्वाचनायोगेन पञ्जीकरणं कर्तव्यम्। अपरतः एकनाथ शिंदे समूहः हरीश साल्वे च अकथयत् यत् पृथक् समूहः न खलु नूतनं दलं व्यरचयत्, अपि च इदमेव वास्तविकं शिवसेना दलमस्ति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य बेंगलुरु यात्रायाम् अस्ति। अमित शाह भारतीयोद्योग परिसंघस्य संकल्प से सिद्धि इति सम्मेलने अपि भागं ग्रहीष्यति। गृहमंत्री अस्य सम्मेलनस्य तृतीय संस्करणं संबोधयिष्यति। स्वीय बेंगलुरु यात्रावधौ श्री शाह भाजपा दलस्य कर्णाटक भागस्य नेतृभिः साकम् उपवेशनं करिष्यति इति संभाव्यते। देहल्यां मंकी पॉक्स संक्रमणस्य एकोन्यः रोगी प्राप्तः। यं सम्मिल्य देशे अधुना पर्यन्तं 9 संक्रान्ताः अभवन्। तत्रैव अयं दिल्ल्यां च चतुर्थः रोगी वर्तते। देशे एतत् संक्रमण संवर्धनं वीक्ष्य केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयः विगत बुधवासरे महामारीतः संरक्षणाय किं करणीयं किं न वा इत्येतां सूचीम् एकां प्रख्यापितवान्। विदेश मंत्री एस जयशंकरः भारत आसियान मंत्री स्तरीयोपवेशनाय कंबोडिया देशस्य 2 दिवसीय यात्रायाम् अस्ति। विदेश मंत्री अद्य नामपहिन राजधान्याम् आयोजिते आसियान भारत मंत्री स्तरीय वार्षिकोपवेशने भागं ग्रहीष्यति। प्रतिवर्षम् आयोज्यमाने अस्मिन् सत्रे भारत आसियान सम्बन्धेषु प्रगतेः समीक्षा भविष्यति। इतः प्राक् विदेश मंत्री सीएम रीप स्थलात् स्वयात्राम् आरब्धवान्। एस जयशंकरः भारतस्य पुरातत्व संरक्षणेन यत्र संरक्षण कार्यं भवति तत्रत्य भ्रमणमपि कृतवान्। विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् विदेश मन्त्रालयः एतादृश प्रयत्नानां समर्थने सर्वदा गौरवम् अनुभवति। विदेशमन्त्री सीएम रीप इत्यत्र पारंपरिक एशियाई वस्त्राणाम् एमसीजी इत्यस्य संग्रहालयस्य यात्रां कृतवान्। अयं संग्रहालयः गंगा मेकांग नद्योः उपत्यकानां मध्ये पारंपरिक सम्बन्धान् प्रदर्शयति। विदेशमन्त्री ताप्रोहम मंदिर संरक्षण स्थलस्य अपि यात्रां कृतवान्। डॉक्टर एस जयशंकरः तत्र वैदेशिक प्रकरणेभ्यः सुरक्षानीति विषयेभ्यश्च यूरोपीय संघस्य उच्च प्रतिनिधिना यूरोपीय संघायोगस्य उपाध्यक्षेण च जोसेफ बोरेल इत्यनेन सह मिलितवान्। केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः उक्तवान् यत् त्रिवर्ण पताका न किञ्चित् वस्त्रजातमात्रमेव अपितु तच्छक्तिः 30 कोटि जनानाम् एकत्रीकरणस्य वर्तते। तेनोक्तं यत् आगामी सन्ततयेस्य सन्देशः दीयमानः यत् वयं भारतम् एकत्र स्थापयिष्यामः, अग्रे वर्धयिष्यामः, अतोऽपि दृढतरं शक्तिमत् करिष्यामः। दिखाती है तिरंगा यात्रा, एक और संदेश देती है कि आज की पीढ़ी प्रणाम करती है, सच्ची श्रद्धांजलि देती है स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई थी, और ये विश्वास दिलाती है कि हम देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए एकजुट रहेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे और तिरंगे की आन बान शान को बनाए रखेंगे। ये भी विश्वास दिलाते हैं
कि ये जो तिरंगा है ये चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगा 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट रखता है। तिरंगा यात्रामालक्ष्य केन्द्रीय मन्त्रिणः प्रह्लाद जोशिना उक्तं यत् अस्माभिः तिरंगा यात्रार्थं विपक्षिदलान्यपि आहूतानि किन्तु तानि न आगतानि। हम सबको लिखा था और बात भी हुआ था। माननीय हमारा अर्जुन राम मेघवाल जी सबसे स्वयं, क्योंकि उनके पास कल्चर मंत्रालय भी है, पार्लियामेंट अफेयर्स भी है, इसके कारण सबसे उनका बातचीत हुआ था। फिर भी नहीं आते हैं तो क्या करें, हम तो ज़्यादा इसमें, क्योंकि हम आई डो नॉट वांट टू मेक पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट, तो इसलिए मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। उनके जो विवेचना के ऊपर मैं छोड़ना चाहता हूँ। अगर हमने इसलिए मंच के ऊपर भी माननीय उपराष्ट्रपति को बुलाया था, उपराष्ट्रपति तो नॉन पॉलिटिकल है, तो सिर्फ उपराष्ट्रपति से हमने फ्लैग ऑफ की व्यवस्था की थी। केन्द्रीय पर्यावरण मन्त्रालयेन उक्तं यत् भारत चीन देशयोः पार्श्वे अधुना अन्ताराष्ट्रिय महत्त्वस्य सर्वाधिकाः आर्द्रभूमयः सन्ति, तथा च इदानीं तेषां संख्या आहत्य 64 यावत् जाता, यतोहि इतोपि 10 भारतीयस्थलानि रामसर-सूचौ सम्मिलितानि। रामसर-सूचेः उद्देश्यम् आर्द्रभूमीनाम् अन्ताराष्ट्रिय जालस्य विकासः, रक्षणं च अस्ति यत् तेषां पारिस्थितिकी तंत्र घटकानां, प्रक्रियाणां, लाभानां च रक्षणद्वारा वैश्विक जैविक विविधतायाः रक्षणाय तथा च मानवजीवनाय महत्वपूर्णं भवति। सूचौ समाविष्टेषु 10 नूतनस्थलेषु तमिलनाडुराज्यस्य 6, गोवा, कर्णाटक, मध्यप्रदेश, ओडिशा चेति राज्यानाम् एकैकं स्थलमस्ति। एतानि आर्द्रभूमि स्थलानि देशे 61,350,000,12 हेक्टेयर मिते क्षेत्रे विस्तृतानि सन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपि 10 अतोऽपि आर्द्रभूमयः रामसर स्थलरूपेण उल्लेखयितुं महत् प्रसन्नतां प्राकाटयत्। स्वीये ट्वीट सन्देशे प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् विगते मासे 5 स्थलेभ्यः समानमान्यता प्रदत्ता आसीत्। इदं हि अस्मदीयां प्राकृतिक परिवेश रक्षणाय प्रतिबद्धताम् इतोऽपि सुदृढयिष्यति। भारतस्य तेजस्विन् शंकरः बर्मिंघम नगरे समायोजितेषु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु ऊर्ध्वकूर्दन प्रतियोगितायां कांस्य पदकं विजित्य इतिहासं व्यरचयत्। राष्ट्रमण्डल खेलासु अस्यां प्रतियोगितायां भारतस्य इदं प्रथमं पदकमस्ति। असौ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स इति वर्गे पदकं विजितवान्। एतासु क्रीडासु एथलेटिक्स प्रतियोगितायां भारतस्य इदं प्रथमं पदकं विद्यते। राष्ट्रियं कीर्तिमानधारकः तेजस्विन् शंकरः अस्ति। बर्मिंघम नगरे समायोजितेषु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतं स्क्वॉश क्रीडायाम् अपि पदकं समर्जयत्। भारतस्य अनुभवी क्रीडकः सौरभः घोषालः राष्ट्राय कांस्य पदकं विजितवान्। अस्यां स्पर्धायां भारतस्य इदं प्रथमं पदकम्। घोषालः राष्ट्रमण्डल क्रीडासु स्क्वॉश क्रीडायां पदक विजेतृषु प्रथमो भारतीयः जातः। बर्मिंघम नगरे समायोजितेषु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतस्य तूलिकामान महिलानाम् 78 किलोग्राम भारमिते वर्गे रजतपदकम् अर्जयत्। बर्मिंघम राष्ट्रमण्डलीयं जूडो सम्बद्धम् इदं तृतीयं पदकम् अस्ति भारतस्य। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।